Suraj Kheni. Rabbani the bowler. Rabbani will be looking to pick up early wickets here. It's an 8-over game, so it's going to be important to see what is the stance of both these batters. Certainly, the power play overs with the field restrictions, they are certainly going to go on top of the field restrictions and try and get few runs, especially in the first 2 or 3 overs. And once maybe they can reconcile if they lose a wicket. Yes, umpire saying, let's start the play, asking both the batters, asking the bowler, and here it is. Play resumes. Rabbani trying to sweep the ball and started off in a gentle fashion. And this is his advantage as a bowler. He just comes with a simple slow run-up, not too quick like a fast bowler, and can bowl that slow, loopy leg cutters. Very effective variations. The change of pace, change of length is very crucial in any form of cricket. This time in the air, straight in the hands in the short cover. Full toss ball, a lower full toss ball, tried to hit in the air. He was trying to intentionally play it over the covers fielder, didn't get the elevation, went flat, straight in the hands, no chance of dropping that catch, and that marks the end of the first wicket. It's 0 for 1. What a start. What a start. You must be hoping to get such a start here quite early. And that is what they have got. Once you get a wicket without any runs on the board, that always lifts the morale, especially in an encounter with a do-or-die situation. The team wins here, enters and go through tomorrow for Sangam Premier League Super 8 stages. And the team that doesn't win, loses here, goes back straight at home. That's how the pressure is. So it's basically quarter league that is going to be played tomorrow. The 2 teams that won yesterday are going to play against the 2 teams that enter today. One of the teams is remaining. 3 teams we have already known who are the 3 teams. The third one being Amazing Asolna. And now winner of these 2 teams is going to be the 4th team that is going to play the quarter league tomorrow. The best of the start for the bowling team, Sydney Strikers. And in comes Amit Patil to give company to Suraj Kheni. Suraj still at the non-strikers end, awaiting his striking end. So change of the bowling mark from round to over. So again, he's bowling the slow leg cutters and very effective. Sometimes when you start bowling without giving too much of pace, what the batsman has to do is he has to make the pace of the surface of the deck. And when you are bowling that slow, loopy leg cutters, you certainly don't pick it from the hands. It's the last moment when he's into his delivery stride. He just tickles the ball with his fingers and just gets it leg spins. Yeah, another one, you can see very, very slow leg cutters. This time the opportunity was there, but the pace was not provided. The way the batters are batting at the moment, the intention looks to be maybe just try to take singles and boundaries in between. They already lost a wicket. And it is time to rethink the strategy once you lose a wicket of the very first or second ball. 1 for 1 at the moment. In fact, 2 for 1. Very steady over at the moment from Rabbani. This time the batter tried to go in the air. There's a fielder there. Oh, he has taken it. No, it went down off his hands. He dropped it, but this was never an easy take. Never an easy take. The first thought and the first look was he almost went 15 meters trying to take that catch. He almost grabbed it to one hand and then it popped out of the hands. So a boundary given here. Here is the replay. Shafiq, the fielder, fabulous work he had done. Certainly not an easy groundwork to do, covering so much of distance. To wait for the umpire signal. Yes, it's signal wide. So almost like every delivery has been slower leg cutter delivery from
Rabbani. That is his go-to delivery, especially in the first overs or the batting power play overs, where the bowler doesn't want the batter to be given away with a lot of pace. It's a normal field set here in an orthodox game where it's a 8-over game. The power play overs are in play at the moment. The first over, one in the deep covers. This time it's straight down the ground, very safe, very elegant and very effective. Didn't try to play across, always intended to play with a straight bat. The fielders inside, up and over, boundary, as easy as it gets. This is sensible and good batting here. At the end of 1 over is 11 for 1. Shantidurg Mahamaya, in spite of losing a wicket of the very second ball, they are coming back with few runs in this over. And Rabbani, although started with a decent fashion, picking up 1 wicket, but he has conceded 11 runs. So even Stevens at the moment in the first over, both the teams are matching each other and intensity is very high in this game. And we are having a good time here at Sangam Premier League. Well, especially from tennis cricket, they are having their own words, chanting wonderful names. Normally the names that they hear day in, day out against the friends. So good time in Goa. The season, the new year is coming soon. Tomorrow is going to be the Christmas time. The big Christmas festivities in Goa. We're sharing the goodies and sharing the cakes. And the traditional Goan cuisines being shared by our Christmas and Christian brothers during the Christmas time. That is always the bonding among all the communities in Goa, and that is the strong pillar that has been laid, the foundation laid in Goa, and that is what you are going to see from tomorrow onwards till the new year. We're celebrated by entire community, entire Goan people together. It's just a big thing. The Christmas time, the New Year time in Goa, with lots of tourists flocking in together, and also cricket coming along with it. Here comes the second over. Vicky Pujari. This time in the air, and that is taken. Once again trying to go up over that mid-off region fielder. Didn't try to hit it too hard. Did not get the elevation. Did not clear the infield. And that is the end of it. Second wicket going down is Amit Patil. In fact, Suraj Kene. Suraj Kane is the one that has departed, and it was a good piece of delivery, you can say. He has pitched it slightly in towards the batter, did not get the elevation. He had to just fetch it and dug it out of the ground, and you don't get that much of power when you are dugging it out in the air. So a good piece of bowling, and they are doing a decent job at the moment. Sydney Strikers, 2 wickets already with 11 runs on the board. And Prasad, sir, is along with me, and it's a very good point here is when you are playing the 8 overs game, especially the teams who are playing 2 games, fitness also is very important. It's not only about hitting the balls or bowling it fast, keeping the fitness levels, practicing sessions, working hard in the nets, and also the pre-exercises before they start the warm-up and the cooling down exercises. All that matter if you are going to play a long tournament like this one, where after these 2 or 3 games you are going to play the quarter league and then the semis and the finals. So the fitness is going to be very important. That's a key factor. Nowadays with the cricket, also building the economies of the homes has become so important for all the players who are playing in professional circuit to keep themselves fit and always ready for any tournament, any big like this one. Trying to cut that ball away. This is the opportunity at the long strikers end, and that was close. Not the easiest of the singles in the short covers region. Very well bowled, back of length. The ball was shying away, cut away towards that region. And
Good piece of fielding. They're coming very quickly in towards the ball. That is a good sign of a team that is very important. Once again, nicely played. Never intended to hit it hard. He knows that he's bowling a fine line at the moment, just around the back of length. And we have seen many leg cutter bowlers with different sort of actions. But here, Vicky Pujari is bowling with a little pace as well, along with the leg cut. We have seen the bowlers who are bowling the leg spin, but slightly tossed up deliveries. But this is quite good enough pace. Once again, the sharp leg cut, and that's the reason why they are still not getting a hang out in middle. And what the captain has done here, he has kept a man in the deep point or backward point region. The reason is if they intend to go for a switch hit, it might go in the air, and that player is going to be effective. It plays in the minds of both the batters as well, whether we have to go for the switch hit or not. At the moment, it's 14 for 2 in 1.4. This is in the air. There's a fielder there. There is a fielder. He's coming underneath and he takes an easy one. Went for the normal sweep. Slog sweep. Did not get the right timing. He faltered on the ground, toppled on the ground, trying to get his shape and a good part of the bat, but it got a leading edge and a good catch taken. So that marks the end of the third wicket. Vicky Pujari strikes double blow in this over. It's 14 for 3 at the moment. Shantidurg Mahamaya. And you came to know when he started his spell, he looks to be a very, very effective bowler with his leg cutters. And once you start pitching and once you are getting the rhythm, the confidence builds up in yourself after bowling 1 or 2 balls. It's not a 4 overs spell that is like in T20 game. You might get 1 over or 2 overs. So you got to be active. You got to warm up yourself. You got to come hard right from the word go. And that is what Vicky Pujari has shown. Just considered 3 runs and picked up 2 wickets. This can be a path-breaking and a match-winning bowling performance from Vicky. Many of the cricket enthusiasts from across Sangam, Kurcharem and nearby areas are coming in slow and large numbers. It's not heavy, but it's certainly the enthusiast who knows the value of the game and also knows how many different players and big players have come here in Sangam Premier League, have thronged on this ground and watching this very keenly. A very good contest in our hands at the moment. What a game of cricket, the last one where Amazing Osolna beat Sydney Strikers. They won it by just 1 wicket, and what a hand play by Syed Badi. Magnificent knock that was, and that's why he was awarded the player of the game. It's just 18 runs, but impact that 18 runs created when somewhere 7, 8, 9 wickets were fallen down, and playing with number 10, number 11 is never easy. Wickets were falling down, but he kept his strong foot on the ground and kept his composure. Nicely played. And that is what one of these batters, Muzammil and Arjun Wasita, has to do as well. They must see how this middle phase is taken off from the bowling side. At the moment, Vicky Pujari striking 2 in this over. Just considered 4 runs in his first. End of 2 overs is 15 for 3. So after the first over, that was bowled here by Rabbani and second by Vicky Pujari. The third over has been brought here by Santosh. Santosh Patil is with the third over. Muzammil is on strike, played off the back foot. Just a punch in the extra cover region.
If you look at the field for the left-handers, there are 3 men on the leg side and 2 men on the offside, one for the switch hit and one in the deep extra cover for that inside-out shot. Many of the bowlers nowadays just employ this particular field. So it's an in and out field where switch hit becomes a very important and key shot. Nowadays, almost every odd other batsman try to play the switch hits and gets it right on the middle as well, because they practice a lot in the net. So many switch hits we have seen from many of the batters that has gone long distance. There's another one tried here. That goes straight in the hands. That goes straight in the hands. Well, the batter is considered, or he will consider himself unlucky at the moment. He just flashed it hard and he got the timing and good pace onto it, but he just found the fielder straight in the hands. No error committed by the fielders, and another one departs. That's the replay here. The ball came slow. He banged it reverse way, and there he found the fielder. A little more bounce than he expected. But I think if he had got it in the gap and a good placement, he would have certainly got a boundary. शुक्रिया हरी जी, हमारे साथ जिशान जुड़े हुए हैं और बीच मैदान पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। और जिशान, शुरुआत जब बल्लेबाज अमित मैदान के अंदर चले गए तो बहुत खूबसूरती के साथ कॉपी बुक स्टाइल में बल्लेबाजी हुई, उसके बाद में रचनात्मक बल्लेबाजी करने का प्रयास किया गया। तो क्या वो बेसिक क्रिकेट थोड़ा सा बल्लेबाज भूल गए और वो स्ट्राइक रोटेट करना भूल गए, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? हाँ, जैसे कि अभी देख रहे हो कि अमित के ऊपर पूरा प्रेशर है, अभी उसका विकेट जाने का, नया बैट्समैन जा रहा है, वो विकेट पे टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा है थोड़ा। तो सोचेंगे कि अभी आने वाले जो बैट्समैन है कि उनको थोड़ा स्ट्रेटजी देंगे कि थोड़ा टाइम स्पेंड करो विकेट पे, कैलकुलेट करके खेलो, जो ख़राब बॉल आ रहा तो उसको पनिश करो। जी हाँ जिशान, आपके साथ चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़े हरीश जी। That is pulled away in style. Oh, what a superb shot this is. At the moment, you see there are 4 wickets down. He just comes and plays a fabulous full shot over the square leg region. He picked it up early, picked the length early, and picked the bones out of it. It's never easy coming into the very first ball and playing a shot like this. Certainly looks to be in good touch. Ramesh. With this 6, the score moves on to 22 for the loss of 4. This is an 8-over game. Mind you, ladies and gentlemen, who have joined us on Tennis Cricket and who have come on the ground to watch this game. One of the most watched games so far, just because it's a knockout, do-or-die game for both the teams. A lot of breeze on this ground at this point of time, and that's the reason why you see the bails falling from the grooves. And little time taken as well. One of the occasions where there was an appeal against Syed Badi as well in the previous game. That hardly the ball was anywhere near to the wickets. This time getting an outside edge, but the fielder is there in the short term and trying to actually open the face of the bat to get it in between that point and short term and region fielder, getting a single down. This is the time to reconcile. This is the time to resurrect the innings. 4 wickets, I can understand in an 8-over game. Nowadays, everyone just comes and tries to hit 6 of almost every ball in tennis ball cricket. But 8-over we have seen, or I've seen many a times, just total collapse of entire team because everyone comes and tries to hit every ball out of the park. But cricket doesn't go that way. Sometimes you got to respect the bowlers. Sometimes one of the bowlers might be in good spell. You got to see him off the way he's bowling. And there is a little extra bounce as well. It's not easy. As 8 overs, you might see that somewhere around 65 might be a good total if you have got good bowling. Nicely played down the ground. And just going to get a single. This is good face, good batting. Sensible batting at the moment from both the batters of Shantidurg Mahamaya. They have seen 4 of the batters going back, and at the end of 3 overs, 9 runs considered, and the wicket for Santosh Patil in that over is 24 for 4. Over to Prashant. शुक्रिया रिजी, हमारे साथ जिशान जुड़े हुए हैं। जिस तरह से अब बल्लेबाजी हो रही है, क्या वो आपको पहले 2 ओवर में बल्लेबाजी इसी अंदाज से इसी तकनीक के साथ करनी थी? हाँ, जैसे कि अभी जो सिचुएशन में लोग कैलकुलेशन करके खेल रहे, वही हम लोग सोच रहे थे कि ऊपर के पावर प्ले के दोनों ओवर में हमारे जो ओपनर्स है वो सेम स्ट्रेटेजी लेके खेले।
अभी यहाँ से कितना टोटल आप देख रहे हैं 8 ओवर का मुकाबला है? हम लोग ट्राई करेंगे 60-65 प्लस करने के लिए। वो हमारा बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग थोड़ा डिफेंड करेंगे उसको। 65 रन बनाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज, वही स्ट्रैटेजी है हरी जी। इंटरेस्टिंग मैच है और दोनों बल्लेबाज बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं। Yes, and I was also expecting a total of 65 to 70 might be a good total if you got good bowling. Many a times when the teams are balanced, they've got 5 good bowlers. You never think of a total of 90. Yes, one of the batsmen just goes berserk, hits a quick fire 40 or 50. You can get that 90, 100 runs. But in a situation like this, there is a lot of pressure on everyone. So Javed to Muzammil at the moment. Good battle. It looks to be a crafty batter at the moment. Looks very elegant, and at the moment he's not lifting the bat. He knows the team is not in a comfortable position at the moment. There is still 4 more overs to go after this one. So if you consider this one, 5 overs to go, and 29 balls are quite plenty enough in a tennis cricket match to post a good total. So this is the time to just to see what the bowlers are doing. Just get around maybe 8-9 runs per over, and then try to see off in the last 3 or 4. It's a wide call by the umpire, and not a bad idea here from the bowler. They are trying to bowl the quick leg cutters. Sometimes you got to pitch it just around the outside off stump or the 4th or 5th stump, and then try to get it away. Protection in the deep in the backward point region for that shot, uppercut shot or the switch hit. Beautifully bowl, very well played. In fact, never played with hard hands, just coming, leaning into the shot, leaning into the drive, and getting the single. So you can see the soft hands being used at the moment by both these batters, trying to nudge around for singles and doubles. They very well know. Even there was an interview taken by Prashant where the player had said, yeah, 65 to 70 might be a good total. We have got good bowling, and that is the right mentality. That is the right thinking from the batting unit at the moment. Nicely clipped, very well played off the back foot. This is good line, and he's mixing it very well at the moment, Javed. He knows that the batting line is under pressure, so I'm not trying to do anything fancy. Plain simple cricket, bowling back of length, and asking the questions to the batters. And that's sensible. And this is also a time where the bowler feels, or the bowling side and the captain will feel, yes, this is a time also to bowl a very good over. Maybe give just 5 or 6 and try to get back in the game. Fine piece of bowling. Fine piece of bowling. Now he has gone for the switch hit, but the intent was made quite early. You should never give it an intention for the bowler, because nowadays the bowler sees the batter at the last moment and can change the delivery and has bowled a full ball. So you got to be one up against the batter, and that is exactly what Javed is doing. It's one up against the batter, gauging him, watching at the last moment and changing his length. Another slower one. This time once again a similar shot. That lean drive, the cover drive for a single. Never that flamboyant drive. Check drive for a single, I would say. That is still the 4th over in progress. Just considered 5 runs so far. And that's exactly what the bowling side would like. Sydney Strikers. A good lean over. And a patch of just around 10 runs maybe in a couple of overs that is going to pile and creep up on the batters. Going for the reverse hit once again. Opportunity of a run out. Not the best of the throws. Not the best of the throws. It was way away from the bowler and his non-striking end. And that concedes another one in the form of extra. So that marks the end of over number 4. It is 31 for the loss of 4. 7 runs considered by Javed Sandhi in this over. 31 for 4. They are going at a current run rate of 7.75 and a partnership of 15 runs in 10 balls between Ramesh and Muzammil. So Shantidurg and Mahamaya are trying to come back in this game, courtesy of a partnership between both these batters out in the middle. So this is the time to resurrect, reconcile, retrospect, and come back strongly in the second half.
The problem is they've lost 4 wickets in earlier stages in the first 2 or 3 overs. That is what set them on the back foot. And whenever you are on the back foot, you never try to put your foot on the accelerator, because you can crash out within the span of 8 overs. So wait for your opportunities, wait for that highway to come. Nicely bowled, right in the full length, just outside. You saw the batsman shuffling across, and that is exactly the line that many of the bowlers bowl nowadays. Whenever you see a batter shuffling, they try to just fire it outside the off stump or follow close to the batter so that he doesn't have that backlift, the high backlift, and try to go for the big shot. Sensible bowling so far from the bowlers. Second over for Santosh so far. Once again driving. There is a protection in the deep extra cover region. So just getting a single at the moment. They are trying hard at the moment. They are trying to also create a negative vibe in the mind of the bowlers by trying to shuffle, trying to make a movement out in the popping crease, giving an indication, yeah, we're going for the big shot. So the bowler has to be on the mark. He has to keep the composure. Fine piece of batting. Just about the singles at the moment. So they are keeping the things in check, well in control. The bowling side, Sydney Strikers opting to field first after winning the toss, are certainly doing a commendable job. They know certainly which is the side that is helping them, how they are going to bowl on this, how they are going to bowl the cutters, and certainly with the variation that the bowlers on the top at the moment, just 2 runs considered in the first 3 balls. Big shot tried after a long time. That goes in the hand towards the short fine leg region, and another one departs. Finally, a big shot tried, but this was not the right ball to be picked up for the big shot. Slight more bounce than expected by the batter, and no error committed in the field. 5th one, that is half the side, back to the pavilion. Ramesh, after playing a knock of 10 of just 8 balls with a strike rate of 125, departs. 33 for 5 at the moment, Shantidurg Mahamaya. And I think we must give credit to the bowling as well. They have kept the things in check. Especially the 3rd or 4th and the start of the 5th over was so good. They have not considered too many runs. And now they feel the thirst of the runs. Thirst of not getting plenty of the loose balls so far. What you expect sometimes from the bowlers. But no loose balls have been given. And that is the reason why they are committing errors. And that's why the wickets are being fallen. The credit must be given more to the bowling and the fielding of Sydney Strikers. So keep them in the hunt, keep them in the race of winning this match. And they should understand that bowling of Shantidurg Mahamaya is also of pretty good standards. They've got 5 good bowlers. So keeping them at the bare minimum levels is going to be imperative and important if they need to go forward in this tournament. Quarter league games are going to be played tomorrow. 3 teams are already well known. Sai Jai Bodgeshwar, Tirupati Savade, and Amazing Osola. These are the 3 teams that have entered into the quarter league that is going to be played on the Christmas festivities, Christmas Eve tomorrow. And 4th team is still awaited. It's the last game of the day. Nicely cut away towards the backward point region, but could not find a gap. The width was there, yes. The length was also there to be cut away. Not a bad choice of the shots at the moment because he's new to the crease. Ajay Patil gets himself off the mark with a single down at the behind the square on the offside. So far, Santosh Patil has conceded 12 runs and picked up a couple of wickets. Crucial wickets, I must say. This time in the air, this might be one more. There is a man there in the deep and no error committed. So 3rd one, once again in the kitty. The player of the game in the previous game, Santosh, this time as well picks up 3 wickets in his 2-over spell and finishes with a positive frame of mind with a wicket of the last ball. So Muzammil, the man who was building a partnership with Ramesh, both of them have been taken here by the bowler Santosh in the same over. That marks the end of over number 5. It's 34 for the loss of 6.
So 5 overs gone, 34 for the loss of 6 wickets, and Faisal Sheikh comes on to the wicket to give company to Ajay Patil. This time tried to bowl wide, yeah, very well left here. But sometimes the bowler thinks that the batter is trying to play the slog shot and he's trying to shuffle. There is a lot of difference between trigger movement and shuffle, and that is what the umpire is the best person to judge it. The trigger movement. Oh, this might be an edge as well. The reaction from the batter, there was no reaction from the umpire, not from the bowler. Beautiful leg cutter bowling here, and fine piece of bowling, getting the leading edge, hitting his legs there, and is little unlucky, you can say, for the batter as well. Scooped in the air, and another wicket. That's marked the end of a short stay on the wicket for Ajay Patil. 7th wicket going down at the score of 35. Yes, now they are losing the grip at the moment on this game. Shantidurg Mahamaya. Short ball, but a lot of pace. This time it was the quicker ball. So look at the variations. It's the last moment that he changes the grip on the fingers and bowls the leg cutters and the quick off cutters, depending upon whether it's the left-hander on strike or the right-hander on strike. A very good advantage as a bowler. Not many of the bowlers can change it at the last moment. So Javed is certainly having that wonderful thinking. This is nicely played, straight in the hands. Uppercut shot. He thought that it is going over the head of the fielder, and there is a discussion between the batter and the bowler saying that I have hit it really well, but that was a fielder. I have placed the fielder especially for you over there. I knew that you are going to hit over there, my friend. So it's the Christmas time, and the Santa Claus is waiting for me, not for you. That marks the end of wicket number 8. Is 36 for 8, and they are losing the plot at the moment, losing it quickly. And it was the same fielder in the same position, and it was the same bowler. So maybe the bowler is telling, yes, I've got you out over there the previous occasion, and once again you are also going to play the same shot. I've placed the fielder same position, and it's a repeat telecast of the first wicket. It's something sometimes when you put up the Xerox, it's repeating the Xerox copy of the previous dismissal. If someone sees it in the previous game or sees this game at the moment, you will say, oh, that was the previous game. No, my friend, this is a live game. Ravi Bumbak. Well, right now at this situation, when you see Shantidurg Mahamaya struggling, Ravi Bumbak coming, Ravi Bumbak has to play a bombastic innings. If he plays a bombastic innings, then there is a chance, because they need to post a good total. They need to post a decent total, and things not looking good at the moment. You can see the fielding at the instance here. There is a slip in place in a 8-over game. This is the 6th over in progress. Who keeps slips in such a big game? That shows which team is high on the moment. And that's the reason why. That's the reason why is bowling those leg cutters, quick leg cutters, effective ones. And that's why they are hoping that if he goes to drive the ball, that ball might go in the slip. Attacking field set here by Sydney Strikers. This time once again, wide called by the umpire, and the wicketkeeper is saying maybe it is well inside. He's in the best position, and Javed also surprised with that call, so they have gone for the referral here. .
Yes, they have gone for the referral. They think that it is not wide. It is well inside the guideline. And we have got the best camera work here. TennisCricket.in. Tennis Cricket gets you the best of the cameras and best of the angles. So certainly this is also going to be viewed by the umpire. Here is the replay. Let's see. Javed Sandhi in the bowling mark. Delivers the ball just outside. The third umpire is also having a close look. I want to repeat it again. Here is the replay once again. It's close to that first guideline. So wide call. Yeah, wide call by even the third umpire. So it's a wide ball. It is a wide ball. Please remember. Yes. So review is lost here by Sydney Strikers. This time driven nicely in the covers region. And you expect that when number 10, number 11, number 9 are batting. Even you bowl a full toss ball, at the moment they will be thinking of playing the 8 overs. Lovely over once again, and what a spell of bowling of a medium pace bowling the leg cutters, bowling the off cutters. One ball still left in this spell. So far 11 runs and a couple of wickets taken by Javed Sandhi, Jishan Khan and Ravi Bumbak. 38 for 8, left-hander. This time going for the big hit. Oh, missed it altogether. He's taking a jog in the park. He wanted to take a jog in the park, sent back by his partner, jogging partner. And that is marking the end of number 6 overs, 38 for 8 at the moment. Shantidurg Mahamaya is struggling. They've lost 8 wickets. They've got 12 balls still left. Let's see how much they score in those 12 balls. Well, it all started with good bowling from Rabbani. Picked up a wicket of the first over. Istiala Sheikh went back, and then Suraj Kene, Amit Patil, Arjun Wasta, Muzammil and Ramesh tried to reject the innings with 1-6 in between the partnership and lots of singles. But after Ramesh departed, it was Muzammil that went back, and Ajay Patil, Faisal Sheikh followed them. And that's the reason why you hardly see any big innings nor partnership between any of the players from Shantidurg Mahamaya. And when you do that, you always struggle to post a big total. Vicky Pujari once again with that slower leg cut. Most of the bowlers are bowling the leg cutters, and they have to bowl it in the right areas. And when you're bowling not to the top order batters, there is always a struggle that is going to happen for the lower middle order. There is a slip in place, there is a fine leg, there is a point as well, short covers. 5 fielders close to the boundary right. Cutting away nicely, but is going to get a single at the most. But I think the hard work has been done earlier in the first part by the bowlers of Sydney Strikers, winning the toss and electing to bowl first. And certainly the captain is showing why they have decided to bowl first, because they want this team to be bundled out or get as low as possible so that we can chase it very well in the second part. They know they have got a decent batting and bowling department, and if the bowlers can bowl like this and restrict it to under 50, I think that is the half job done, and the remaining job will be left up to the batters. Missed by the keeper, but half stopped here by the man in the slips. And by signal. So certainly at the moment they are trying to put bat onto the ball, but the ball is also not touching the bat. Struggling with the leg cutters and the in-swingers and the out-swingers at the moment from the bowlers. Vicky Pujari just conceded 5 runs and picked up 2 wickets. Almost all bowlers have been very economical. Another leg spinner here tried.
Bowling in the right areas is the essence of bowling that ball. They have not bowled short, they have not bowled either too full. That back of length, the 2 meter, the 4 meter length away from the batter is a very effective length. And if you keep it outside, if you mix it well, then it certainly brings you a wonderful cocktail here. That is what the bowler needs to do. He just needs to mix everything well. Another cross-batted heave. They are not batting it out at the moment. They're struggling with the timing. They're struggling with the footwork. And even the bat is struggling to find a part of the ball. At the moment, you certainly know which team is fancying their chances to enter being the fourth team. Sydney Strikers. The name comes of Sydney Strikers. This is in the air. This might be a big one. There is a fielder and finally a big one. Finally celebration. It was right in the slot to lift him, and he lifted in a big way. Smoked it out of his bat and smoked it for a long distance. That is exactly what the doctor ordered, and that is exactly what Shantidurg Mahamaya has got. Well, we have seen a lot of dry spell from the batting side, and finally a 6 in the 7th over. End of 7 overs. 47 for 8. Yes, so the time that was given to the bowling side, the captain, is over. So now they are going to be penalized. One extra man from the boundary is going to come inside in the 30-yard circle. Well, the owner of Sydney Strikers certainly is from Sangam, but he has given the name Sydney Strikers. Certainly very popular name in Big Bash. And this format is someone like Big Bash format as well. 4 teams playing against each other on a day, and then 2 of the teams are going after 2 wins into the quarter league stages. And those 2 teams of the first 2 days are going to play the game in the quarter league stages. And 2 of those teams enter into the semi-finals. 47 for the loss of 8 after completion of 7. And here comes the last over. Back of length, getting a single. Let's see how much they want to get as the captain and the players were thinking about getting somewhere around 65. But they are at the moment not heading towards 65. That's because of very tight bowling, very compact control bowling here from all the bowlers. Right from the left arm bowler Sahil, as well as the bowling from Rabbani, Vicky Pujari, Santosh. Everyone is very economical and also into the wickets column. Sahil Momin. Oh, that's wonderful. This is a Chinaman bowling. This is not the leg cutter. He was waiting for the normal orthodox ball, but he has bowled a Chinaman here. It's never easy to bowl Chinaman for a left armers. It might be easy for a right-hander to bowl the leg spins. So wonderful, wonderful art to have Sahil Momin. It always goes like an off-spinner, and this was 3 different deliveries has been showed here by Sahil that shows the talent that this man has, this bowler has. One that came back in, the one that went away like a Chinaman, and then one that skidded on of the surface, a quicker ball. Went straight on, straight in the hands of the keeper. No connection whatsoever. First one was a single, second 2 were 2 dot balls. And at this moment, 48 for 8. Once again, this is scooped in the air. Difficult chance. Just going for a single. Well, they wanted to go for the 2. There's hardly any deliveries left in this entire innings. You never know what sort of total is good enough. We might sometimes think 65 is good enough. Sometimes in cricket, even 40 or 50 is good enough. If you bowl well, if you pick up early wickets. That is why you have to take every extra run, every single run. Another one. An orthodox ball that turns sharply away from the right-hander. Going to get a single. So far, it's all about singles in this over. So they are getting the 50 finally. And 1 ball left. So 50, they are well short of maybe by 15 or 20 runs is what I think.
But cricket is a game of great uncertainties. You never know whether sometimes 65 is good enough or 50 is good enough. Let's see, wait for the second innings. They've got pretty good bowling lineup as well. Oh, this is play and a miss. Play and a miss. So it's a magical over here from the bowler Sohail Momin, and that marks the end of 8 overs. You feel that this has been an entire struggle here for the batters of Shantidurg Mahamaya. Just like the first game that they played, they hardly posted any total. But in the end, you got to give credit to all the bowlers of Sydney Strikers. They were very tight on their bowling, and they've got the variations as well. All the bowlers landed in the right mark, right areas, and got wickets on regular basis. That's why once you get the top order out of the contest, you are never back in the game for the opposition. Here is the scorecard. Ihtiyar Sheikh went early of a duck. Suraj Kene on 1. Amit Patil 10 of 5. Arjun Vasita with 2. Then Muzammil and Ramesh trying to resurrect, got 8 and 10 respectively. And Ajay Patil and Faisal Sheikh also departed early. Jishan played 8 of 9 and 5 of 7. And that is the end of 8. They've just got 50 for the loss of 8. And here is the bowling card. Rabbani started with wicket. First wicket in the very first over. Vicky Pujari with 2. And pick of the bowlers was Santosh Patil. Once again, the player of the game in the previous now picks up 3 wickets for just 12 runs. Javed picks up 2. And Sohail bowls a very frugal over, just conceding 3 runs. So in the end, entire bowlers were economical and wicket takers as well. 50 for 8 is the score that is posted by Shantidurg Mahamaya, and Sydney Strikers require 51 runs to win. So let's come back into this game. Let's come back into this game. Before we talk about yesterday's 2 teams that have reached Saijaya Bodgeshwar, Tirupati Savade. The third one being today Amazing Osolna. So many of the Goan players playing for Amazing Osolna. So you see a lot of fan following, a lot of Goan people, Goan spectators coming on this ground tomorrow and watching it live as well. They are going to face against a lot of players from across the state, and from the states like Maharashtra, Karnataka and other states. So it's going to be a good fight. Amazing Osolna is known as a popular team as well, playing a lot of and winning a lot of tournaments, and that is going to bring a lot of cheer, a lot of crowd. Tomorrow being the Christmas Eve, and cricket coming along with it is always a fun fair. So that's how this game is going. 51 is what is the target. Let's see whether it's been chased. We are waiting for the batters to come out in the middle, and I'll just see off my time from the commentary box. We'll come back in the second half, second phase of this run chase. I'll request my friend Prashant to come in the com box and have his expertise for the first half of this run chase. वेलकम बैक, सभी का स्वागत है सांघी प्रीमियर लीग 2024 और आज का ये आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं। 48 गेंदों में 51 रनों का लक्ष्य रखा गया है शांतादुर्ग महामाया टीम ने सिडनी के सामने। तो ये जो मैच है बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, इस पर कोई संदेह नहीं है। प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। एक चर्चा हो रही है, प्लान बन रहा है, क्या आप ये 51 रन डिपेंड कर सकते हैं, उसके बारे में बिल्कुल चर्चा होती भी। शांतादुर्ग महामाया एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत सारे यंग खिलाड़ी इनके पास, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए गए तो तब वो प्लान कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या स्ट्राइक रोटेट करना या बड़े स्ट्रोक के लिए जाना है। गेंदबाजी का यूनिट बहुत अच्छा है।
रवि बुम्बक बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, जिशान के पास वो काबिलियत है। और इम्पैक्ट प्लेयर अजय की जगह करण, क्या बटन आपको डिपेंड करने हैं। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के साथ मैदान के अंदर आपको बताएंगे दूसरी पारी की अद्भुत कहानी लाइव एक्शन। प्रारंभिक बैटर मैदान के अंदर आप फिलहाल देख सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए संदीप मकवाना, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, अनुभव है और बहुत साल से टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं। और दूसरी एंड पर अमोल, दोनों बैटर के पास काबिलियत बहुत ज़्यादा। 51 रनों का टारगेट, अंपायर रेडी है अविनाश। और फ्रंटलर गेंदबाजी करने के लिए अपने बॉलिंग पार्ट पर फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त रवि बुम्बक गेंदबाजी करने का तैयार। 48 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है, 51 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है, वो आने वाला समय बताएगा। रवि बुम्बक एक शातिर गेंदबाज है। पहली गेंद बहुत अच्छी थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रही है, लेकिन लेग स्टंप के बाहर जा रही है और अंपायर ने वही कहा। पहली गेंद पर बीट किया था बैटर संदीप मकवाना को अमोल। और संदीप मकवाना प्रारंभिक बैटर, सिडनी स्ट्राइकर के। रवि बुम्बक फ्रंटलाइन गेंदबाज है, रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। मैंडेटरी पावर प्ले ऑन। जिशान को आप देख रहे हैं फ्लैंक क्लिप पर, उसके साथ गली है, पॉइंट है, डीप स्ट्रक कवर पर खिलाड़ी तैनात, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर मिड ऑन, उसके साथ डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात। कदमों का इस्तेमाल किया था, गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया, गोदी में गेंद और कैच छोड़ दिया। तो ये जगलर अच्छा बन सकते हैं, जगलर अच्छा बन सकते हैं। और इतना आसान कैच आपने छोड़ दिया है। ये लड्डू था, ये लड्डू था, शादी का समय नहीं, लड्डू बांटने का समय नहीं है। बहुत अच्छी गेंद थी रवि बुम्बक की, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, ऑन साइड पर खेलने का प्रयास किया गया था, फंस गए थे। 1 2 3 4, ओह ये जगलर अच्छा बन सकते हैं। आज के दिन का ये फनी मोमेंट होगा। कैच छोड़ा है, कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर रूटा और गेंदबाज मकवाना साहब का दिल टूटा। पकड़ो कैच, जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ कैच पकड़ेंगे तो एक बार फिर कमबैक करने का मौका भी आपको मिलेगा। 51 रन आपको डिपेंड करने हैं। स्ट्राइक रन पर अमोल, स्कोर 1 बगैर किसी नुकसान के। सिडनी स्ट्राइक, बढ़िया गेंद थी स्टंप के अंदर, पॉइंट क्षेत्र में खेलते, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया। अमोल का खाता खुलता हुआ, स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। हम अपने हौसले के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, देंगे। अपने हौसले के बल हम अपनी प्रतिभा को दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना देंगे। यहाँ से 51 रन आपको डिपेंड करने हैं। और टप्पा खाते के नीचे रही है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी रवि बुम्बक द्वारा। गेंदबाजी का यूनिट बहुत अच्छा है। शांतिदुर्ग महामाया के पास, स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। 4 गेंदों का खेलूबाज जीवन दान संदीप मकवाना को मिला। डीप स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात थे, इन्होंने कैच छोड़ा। एक्शन रिप्ले में देखे, वो बढ़िया गेंद टप्पा खाती थोड़ा नीचे रही है और खड़े खड़े ऑन साइड पर खेलने का प्रयास पुल करना चाहते थे बल्लेबाज संदीप मकवाना। सदी गेंदबाजी रवि बुम्बक द्वारा। स्कोर 2 रन, 44 गेंदे, 49 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मैंडेटरी पावर प्ले आप देख रहे इस वक्त। ऑफ टप के बाहर गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र में खेल दिया, पॉइंट पर खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ आ, लेकिन फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं है। 1 रन लेने का मौका, दूसरे के बारे में मन बना लिया है। अंपायर का क्या फैसला, नॉट आउट कहा। काम का आलस और पैसों का लालच हमें कभी भी महान बनने नहीं देता है। आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है और आप फील्डिंग बहुत खराब कर रहे हैं। बैंक बैलेंस कम है, खर्चा ज्यादा हो रहा है। 51 रन आपको डिपेंड करने हैं फिलहाल इस वक्त। खराब फील्डिंग, पहले कैच छोड़ा, उसके बाद में यहाँ जहाँ सिंगल होना चाहिए था वहाँ आपने 2 रन दिए। संदीप मकवाना 3 पर बल्लेबाजी कर, अमोल फिलहाल 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। रवि बुम्बक का ये ओवर अच्छा, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज संदीप मकवाना। अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते, ये मुकाबला अगर आपको जीतना है तो मिलजुल कर काम करना होगा।
टप्पा खाते ही बिल्कुल थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद गली क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन लेने का मौका। पहले ओवर में संदीप मकवाना को जीवनदान मिला। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या फिलहाल कुल मिलाकर 5 रन बगैर किसी नुकसान के। सिडनी स्ट्राइकर 51 रनों का पीछा करते हुए। रवि बुबक का बहुत ही शानदार ओवर था, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन फील्डिंग थोड़ी खराब रही है। जो हमारे पास नहीं वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। ये सोच के आपको गेंदबाजी करनी है। 42 गेंदों में 40 रन चाहिए। पहले ओवर में बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी रवि बुबक द्वारा। अब गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। कम बॉक्सेस से गेंदबाजी करने के गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर। करण करण सामने वाले टीम को क्या रन देंगे या एक बार फिर अनुशासन के साथ गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक रन पर संदीप मकवाना 4 पर बल्लेबाजी करे। स्कोर 5 बगैर किसी नुकसान के। वक्त बहुत ज्यादा जा रहा है। 4:43 का समय हो गया। फ्लैग स्लिप पर खिलाड़ी तैनात, पॉइंट है उसके साथ। अब कवर पॉइंट पर खिलाड़ी, स्टक पर मिड ऑफ, अपसाइड पर 5 खिलाड़ी हैं संदीप मकवाना के लिए। ऑन साइड पर मिड ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और फाइन लेग। और फिलहाल यंग खिलाड़ी है, नौजवान गेंदबाज करण अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है। कॉम्बॉक्सेस से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सांघी प्रीमियर लीग 2024 इसी प्रतियोगिता में आखिरी दिन ग्रैंड फिनाले के साथ लकी ड्रॉ जो बहुत मशहूर है। रुक गए क्या गेंदबाज करण। सामने संदीप मकवाना, फाइन लेग का खिलाड़ी बहुत फाइन रखा हुआ है। रिवर्सिव खेलना चाहते थे, पीछे खिलाड़ी है। एक रन आपको जरूर मिलेगा। इस बार शॉट अच्छा नहीं था संदीप मकवाना का। 22 का इशारा अंपायर ने किया और मिस्टर स्ट्रक के साथ आंकड़े बदलते हुए स्कोर 6 पर पहुंच चुका है। मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म का नाम था धमाल। उस धमाल फिल्म में वो डब्लू ढूंढने के लिए 2.5 घंटा जाता है। उतना समय जाएगा तो ये मैच नहीं बनने वाला। ये मैच डिपेंड करने के लिए आपको विकेट जल्दी चाहिए और ये मौका तो बिल्कुल आपके लिए आया था। रवि बुबक ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। संदीप मकवाना को वो जीवनदान मिला। आसान कैच आपने छोड़ा था। करण पाटिल गेंदबाजी करे। रिक्वायरमेंट 6 के ऊपर है। 41 गेंदें और 45 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज अमोल, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। अच्छी गेंद, ड्राइव किया। मिडॉन का खिलाड़ी दायरे के अंदर थोड़ा सा दूर रखा गया तो इसका फायदा उठाते हुए दोनों बैटर आंखों का में इशारा करते हुए 1 रन मुकम्मल किया संदीप और अमोल ने। स्कोर इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ दूसरे ओवर में टोटल रन 7 रन बगैर किसी नुकसान के। करण पाटिल बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं और टिप्पा बहुत बढ़िया सही इलाके में करते हुए। बाहर की तरफ गेंद निकली। मिडॉन का खिलाड़ी दायरे के अंदर, उनके ऊपर प्रहार किया गया। गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। संदीप मकवाना के बल्ले से दमदार स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक का एक पहले पढ़ लिया और उसके बाद में चल लिया। 6 रन। टप्पा खाते बिल्कुल उछाल मिला था लेकिन छोटी गेंद थी, समय मिला। हाफ ट्रैकर गेंद, गेंद हाफ ट्रैकर। इस वक्त बल्लेबाज करे हवाई सफर। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, ये लगा शानदार सिक्सर संदीप मकवाना। स्कोर पहुंच चुका 13 पर। संदीप मकवाना की बात करें तो 7 गेंदों में 10। करण पाटिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है। इस बार ज्यादा छोटी गेंदबाजी, टर्न जरूर मिला लेकिन समय बल्लेबाज के पास बहुत ज्यादा था। आगे रखिए, फायदा हो जाएगा। यह अच्छी लाइन है। बल्लेबाज को थोड़ा दुविधा में रखना बहुत जरूरी है। विकेट प्राप्त करने के लिए सामने वाले बल्लेबाज के मन में आशंका के बीज बोना बहुत जरूरी है। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी, देर आए दुरुस्त आए। मैच में कमबैक करने के लिए बहुत अच्छी गेंद आपने डाली है। अब निरंतरता की जरूरत। स्कोर 13 बगैर किसी नुकसान के। रिवर्स स्वीप, तैयार थे बल्लेबाज, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया। गेंद बॉलिंग की तरफ जा रही है। मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, डोंट बी वायलेंट, बी साइलेंट एंड शो योर टैलेंट। संदीप मकवाना मैदान के अंदर अपना जलवा दिखा रहे हैं। कमाल की बल्लेबाजी, कलात्मक, रत्नात्मक और उसके साथ ताकत।
ब्यूटीफुल बैटिंग बाय संदीप मकवाना। देखिए किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था, लेग ब्रेक गेंद थी, पहले बीट किया था इससे पहले, और उसके बाद में इनको पता था वही गेंद आने वाली है तो तैयार थे बल्लेबाज। बहुत शानदार बल्लेबाजी संदीप मकवाना द्वारा। स्प्रिंग ऑन 16, स्कोर 19 पर ऑन। छोटी गेंद आंसर पर खेल दिया, बाउंड्री पर खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी। शानदार स्ट्रोक है, मन मचल के हो गया मोर, दर्शकों के ताली और सीटियों का बढ़ गया शोर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी। ये लगा शानदार फोर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बैटिंग। संदीप मकवाना क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, रत्नात्मक है, कलात्मक है, ताकत है, नजाकत है। संदीप मकवाना का एक बार फिर बल्ला बोल रहा है। 23 स्कोरबोर्ड पर है, बगैर किसी नुकसान के संदीप मकवाना ने डोमिनेट किया करण पाटिल को। वैसे करण पाटिल को बुलाया गया था विकेट के लिए, मैं समझता हूँ इस गेंदबाज को आपको जल्दी लेके आना था। जिशान अभी भी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, जिशान के पास काबिलियत है, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते। रवि बुम्बक की तरफ चले गए हैं कप्तान अमित। करण पाटिल के ओवर में 17। इस ओवर में बल्लेबाजों ने मेला लूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी रही है, महंगा ओवर था करण पाटिल का। 36 गेंदें 28 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। रवि बुम्बक को दोबारा बुलाया गया क्योंकि विकेट टेकर गेंदबाज है, पहले ओवर में केवल 5 रन दिए गए थे। कप्तान भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब आपके पास ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं होता, 51 रन आपको डिपेंड करने हैं। रवि बुम्बक तैयार, ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक है। इस बार पॉइंट क्षेत्र में गेंद आई, कवर पॉइंट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है, गेंद को रोक लिया था, नहीं इस बार गेंद बाउंड्री के बाहर जाते भी। 4 रनों के लिए बिल्कुल इस वक्त चौका मिला, मौका और जड़ दिया, शानदार चौका, खराब फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। क्लासिकल बल्लेबाजी अमोल द्वारा पॉइंट क्षेत्र में गेंद को खेल दिया था, दर्शनीय स्ट्रोक था। संदीप मकवाना 20, अमोल 6 पर खेल रहे, इसको 27 बगैर किसी नुकसान के। तीसरा ओवर प्रगति पर, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी, गेंद को खेल दिया गैप में खेलते हुए, डीप कवर पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, डीप स्टक कवर क्षेत्र में आके गेंद को रोका गया, 1 ही रन मिलेगा। ये अच्छी लाइन है। रवि बुम्बक ने हमेशा बहुत अच्छी गेंदबाजी, सदी भी गेंदबाजी की है, लेकिन फील्डिंग बहुत खराब हो रही है। स्कोर इसी के साथ तीसरे ओवर में 28 बगैर किसी नुकसान के। रिकवर रेट 4.06 का है। संदीप मकवाना एक बहुत ही बेहतरीन पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। 10 गेंदों में 20, अमोल 7 और पहले विकेट के लिए 28 रनों की बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी है। रवि बुम्बक तैयार विकेट के लिए, रिवर्सिव बिल्कुल खेलते हुए खिलाड़ी तैनात, रन लेना चाह रहे। अमोल तैयार ने नॉस्ट्राइक रेन पर विकेट लेना चाह रहे, लेकिन फिलहाल फील्डिंग थोड़ी बेहतर करना बहुत जरूरी है, तब चक्कर बात बनेगी। एक दूसरे का मिलेगा साथ तभी तो बनेगी बात। 28 बगैर किसी नुकसान के। ओवर तीसरा प्रगति पर है। इस 3 गेंदों की कहानी देखिए, चौका, सिंगल और बिंदी गेंद है। रवि बुम्बक का स्पेल दूसरा ओवर डाल रहे हैं, कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार बीट किया है। सुंदर गेंदबाजी रवि बुम्बक द्वारा। दूसरे ओवर में क्या आप जिशान को लेके आ सकते थे, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास प्रोफेशनल बल्लेबाजों के खिलाफ गेंदबाजी करने की कला है, लेकिन आप लेके आए करण को। करण के खिलाफ मकवाना साहब ने रन बनाए और उसी ओवर में 17। मोमेंटम सिडनी बस टाइगर के पास। रिवर्स स्वीप, अच्छा स्ट्रोक है, हवा में गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बिल्कुल जा रही है, कोई मौका नहीं है। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया, शानदार दमदार चौका। स्कोर 32 बगैर किसी नुकसान के। मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी करते संदीप मकवाना, पिटारे में बहुत सारे अच्छे स्ट्रोक हैं और रवि बुम्बक के खिलाफ यह बेहतरीन स्ट्रोक था। 31 गेंदे और 19 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और हरलीन देवल महिलाओं के क्रिकेट में अपने करियर का पहला शतक और दूसरे मुकाबले में, कंग्रेचुलेशन। ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, डीप मिड विकेट पर 1 रन लेने का मौका। तीसरा ओवर 33 रन
बगैर किसी नुकसान के सिडनी स्ट्राइकर 30 गेंदें और जीतने के लिए फिलहाल 18 रनों की जरूरत है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन फील्डिंग थोड़ी और बेहतर करने की जरूरत। 30 गेंदें 18। सांघे प्रीमियर लीग 2024 की एक अद्भुत कहानी। गोवा का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट, गोवा की आन बान शान और वज्र स्पोर्ट कल्चरल क्लब द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन। 30 गेंदें 18 चाहिए, 33 बगैर किसी नुकसान के। सिडनी स्ट्राइकर, जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था, जिसान को आपको जल्दी लेके आना चाहिए था करण की जगह। ऐसे नहीं कि करण के पास वो काबिलियत नहीं है, लेकिन करण के पास अनुभव कम है, जिसान के पास ज्यादा। तो उस वक्त विकेट की सख्त जरूरत थी, तब अपने करण को मौका दिया। ऑनसर पर अच्छा स्ट्रोक है, बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन लेने का मौका। सिंगल के साथ संदीप मकवाना जो बहुत बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ सूझबूझ वाली बल्लेबाजी। 29 गेंदें 17 रनों की जरूरत है। सिडनी स्ट्राइकर, अगर ये मुकाबला आप जीते तो बिल्कुल यहाँ से जो टॉप 4 में कल 4 टीमें खेलने वाली है, उनका ड्रॉ भी हो जाएगा, आप क्वालिफाई भी हो जाएंगे। यहाँ से महामाया को एक अच्छे स्पेल की जरूरत है, जहां 2-3 विकेट या एक हैट्रिक या मेडन ओवर की जरूरत। स्वीप करना चाहते थे, विकेट के सामने पाएंगे। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, जिशान को थोड़ा और ऊपर एक बार फिर गेंदबाजी करने की जरूरत थी, और फिलहाल खराब शॉट था अमोल का, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जोखिम भरा स्ट्रोक खिला गया और अमोल बैक टू द पेविलियन। सिडनी स्ट्राइकर के उम्मीदों को लगता है पहला झटका जिन्होंने बनाया, खास करके अमोल ने बनाया। 7 रन 5 गेंदों का सामना किया। अमोल ने इससे पहले वो कवर ड्राइव लगाया था। अभी फिलहाल ये जो टेनिस का शॉट खेलने की कोशिश फॉलिंग स्वीप का करना चाहते थे, शॉट बहुत खराब था, जिसकी जरूरत नहीं। बहुत ही खराब शॉट था अमोल का, और एक अच्छी साझेदारी बन रही थी, अच्छी साझेदारी पनप रही थी। 34 रन आपने बनाए थे। दूसरी एंड पर मक्खन बल्लेबाजी करे मकवाना साहब, तो भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र सहवाग जब बल्लेबाजी करे तो दूसरी एंड पर आपको मजा लेना था। आपने वो खराब शॉट खेला, एक साझेदारी एक बार फिर बनाने का मौका था, बड़ी साझेदारी आपको बनाने का मौका। मैं तो समझ सकता हूं कि आप नॉट आउट भी डगआउट की तरफ जा सकते थे। 28 गेंदें 17 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज जिशान हमेशा बनाते अपनी पहचान। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंदबाजी। पिछले 7-8 सालों में जिशान को मैंने जो प्रोफेशनल बल्लेबाज बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनके खिलाफ गेंदबाजी करते हुए देखा है। और वैसे एक तरफ रवि बुम्बक है, तो दूसरी एंड पर जिशान को आपको लेके आना था, आप करण को लेके आए, वहां थोड़ी सी गलती हुई। 51 आपको डिपेंड करने हैं। 27 गेंदें 17 चाहिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी जिशान द्वारा। न्यू बैटर नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लाए हैं। इंजमाम, अच्छी लाइन, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जोरदार अपील आउट। विकेट के सामने पाए गए हैं। इंजमाम बैक टू द पेविलियन, सफलता मिली है। दूसरा झटका दिया, इंजमाम आए, इंजमाम चले गए, अपना खाता नहीं खोल पाए। दूसरा झटका सिडनी स्ट्राइकर को लगा है। क्रिकेट डोंट रन विकेट, आपको विकेट नहीं खोना है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन जिशान द्वारा। मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखिए ऑन, केबीज ऑन, कमाल कर रहे मैदान के अंदर जिशान, जी जान लगा के गेंदबाजी कर रहे हैं। 26 गेंदें और 17 रनों की जरूरत है। न्यू बैटर संतोष पाटिल बल्लेबाजी करने के लिए फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त सांघे प्रीमियर लीग 2024। और थोड़ी देर के बाद पहली 2 टीमें तिरुपति साबरडे और
साई जय मुर्गेश्वर। आज अगर देखें तो अमेजिंग ओसेलम जो गोवा की टीम है, और यहाँ से जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई करेगी। 4 टीमों के बीच कल बहुत ज़बरदस्त घमासान होगा, और उसका ड्रॉ इस मुकाबले के बाद, यह मुकाबला समाप्त होने के बाद होने वाला है, और लाइव होगा TennisCricket.in पर। 26 गेंदे 17 रनों की जरूरत, और ड्रॉ के लिए जो यहाँ टीम के कप्तान हैं उनको हमारे कॉम्बॉस की तरफ आना है। 34 2 विकेट के नुकसान पर स्ट्राइकर इन पर बैटर बल्लेबाजी करने के लिए संतोष पाटिल। इनके लिए फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब कुछ अच्छा रहा है। पूरे दिन की कहानी बहुत बढ़िया रही है। ओ, यह करीबी मामला था। व्हाइट बॉल का इशारा डायरेक्ट करने की कोशिश की गई है। दोबारा ब्रॉकुल में जाना चाहते थे, ऑन द टोस गेंदबाजी करने की कोशिश की जिशान ने। इस बार थोड़ा कंट्रोल नहीं था, लेकिन निराश है, थोड़ा सा निराश है, अपने आप पर निराश है। लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, और बल्लेबाज 34 स्टंप की तरफ थे, टारगेट करना चाहते थे मिडल स्टंप को, कंट्रोल नहीं था। 26 गेंदे 15 रन चाहिए। 36 2 विकेट के नुकसान पर सिडनी स्ट्राइकर ओवर चौथा प्रगति पर है। इस गेंद को आपको दोबारा डालना है। व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। बल्लेबाज मकमाना स्ट्राइकर एंड पर फ्लाइट स्लीप, एक गली पॉइंट, उसके साथ डीप स्ट्राइक कवर, एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी है। ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी ऑन साइड पर, बाउंड्री पर एक दायरे के अंदर। और एक अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद क्या थोड़ी ऊपर आई है। लाजवाब गेंदबाजी। वेल 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 वेल, ये ऐसे खिलाड़ी हैं मैच के वजह से जाने नहीं देते। निशान ने पूछा अंपायर को, क्या हम रिव्यू ले सकते हैं? अंपायर ने कहा ना, इस बार अब क्या मैच है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन जिशान द्वारा। सुंदर गेंदबाजी, इस ओवर में विकेट प्राप्त किया, और सवाल पूछा गया था संदीप मकवाना के खिलाफ। एक्शन रिप्ले में देखिए TennisCricket.in पर। 37 2 विकेट के नुकसान पर जिशान कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। संतोष नानी करंट टीम, बहुत बढ़िया काम, बिल्कुल हाई डेफिनेशन कैमरास, उसके साथ अगर देखें तो नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट। बहुत बढ़िया अंपायरिंग। थोड़ी सी गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, इसलिए अंपायर ने नॉट आउट कहा। बढ़िया लाइन, एक अच्छी गेंद। सवाल पूछा गया, लेकिन भाई इस बार ऑफ स्टंप के बाहर खड़े। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, लेकिन रन आपको बचाने हैं। अकेले गेंदबाज नहीं लड़ सकते। रवि बुम्बक जब गेंदबाजी कर रहे थे तब भी अगर देखें तो आपने खराब फील्डिंग की। अभी फिलहाल आप खराब फील्डिंग कर रहे हैं। स्कोर फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ। 24 गेंदे जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर सिडनी स्ट्राइकर। ऑल राइट, थैंक यू डीजे मास्टर। 24 गेंदे 13 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। 38 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। क्या ये कहानी इस तरह से आगे बढ़ेगी? कोई एक ऐसा गेंदबाज है जिस तरह से जिशान ने गेंदबाजी की, उसी अंदाज से वो गेंदबाजी करेगा, स्ट्राइक करेगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन आने वाली अद्भुत कहानी सुनाने के लिए, इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंग्रेजी में हरीश सर। ओवर टू हरीश सर। Thank you, Prashant. Yeah, absolutely, rightly judged by Prashant. Jishan should have come up a little early. And keeping him late at this point of time, and you have just posted 50 runs, I think that's not the right strategy here. And that has really costed them. In spite of 50 runs on the board, you got to give it a fight. You have to give opportunity for your best bowlers to bowl the early overs and try to pick up the early wickets. Jishan coming and bowling a fiery spell, fiery over, just pumped up the spirits. And what imagination! If you would have come in maybe the first or the second over, and he would have picked up this couple of wickets, and even more than that, maybe there could have been little more firepowers in the bowler of Shantidurg Mahamaya. Just 13 runs required in 24 balls, 38 for 2 in 4. Doesn't look too hard target here for Sydney Strikers at the moment. They are very comfortably placed and looks to be cruising. Going for the big one. It was almost in the slot, but sometimes here the bounce is a little bit more. When you're putting in effort, many of the occasions we have seen ball bouncing a little bit more than the expectation. Sometimes you expect it to come to the knee level. It goes more higher towards the waist level. Very well bowled here. Good effort. You can see the effort there from the bowlers. That is what you wanted.
In fact, if you talk about the batting efforts, more effort were required by the top 4 or top 5 batsmen, which was not seen from this team. Here is a Faisal Sheikh, and width was given, room was on offer. He just clipped it on the offside. Very good piece of fielding down towards the deep extra cover boundary, and a couple of runs taken by the batter here. Playing very sensibly at the moment and playing in open spaces. When the width is given, they certainly know there are open spaces, and a referral has been taken. So for the boundary check, so it's for the boundary check, whether it's inside or over the rope. So third umpire will be into action as it has been referred here. So we are expecting the replay. So we want the replay here to be shown for the assistance of the third umpire. And here is the shot. Let's see. There is the ball that has been followed by the cameraman. It is very close to the covers boundary, stopped by the fielder, and very close to the rope over there. But umpire just want to confirm it. He has put it back inside the field of play, and just umpire want to confirm whether his legs have touched the rope or he was safe before he has released the ball from the back of his hand. So small things. They want to be absolutely confirmed with the different angles that are here to assist the umpires, and it is safe. Good fielding. So just going to be a couple of runs that is added to the total, and 10 more runs required. Good to see that they are putting in efforts in spite of things not going in their favor. Just 10 more required for Sydney Strikers to enter into the quarter league stage that is going to be played tomorrow. Another heave. Once again, they are bowling well in these last couple of overs so far. The batter is trying to somehow sneak in with a boundary or a 6, trying to finish this off in style, but it is not happening at the moment. You can imagine if there was 15 or 20 added to the total of 50-51 runs, things could have been drastically different for the bowling side, Shantidurg Mahamaya. That's how the game closes. Again, good piece of bowling, banged in, good effort, back of length, and hitting the ball hard onto the pitch. They don't have that many bowlers who can cut the ball away or in towards the right or left hander, just like so many we have seen in Sydney Strikers. But still they are doing a good job with pace. Nicely played. Just tapped around for a single on the offside. Playing with soft hands. That is what the intention is. Trying to play slowly and steadily. That is a decent over here from Faisal Sheikh. Just 3 runs so far and 1 in the form of leg buys. Marks the end of over number 5. The score is on 43 for the, in fact, 43 for the loss of 2 wickets. In fact, 42 for 2 after 5. So just 9 more runs required, 3 runs per over. Things are still not difficult, but this game is being taken deep here by Sydney Strikers. And certainly a lot of viewers here on the ground, spectators, viewers watching on tennis cricket, expecting the prediction, or certainly after the first innings, was Sydney Strikers will see themselves through as the 4th team. Oh, what a shot. Majestic shot here from the batter. Sandeep Makwana. Well, he just ate that ball. Somebody was saying that Jishan was in a good spot, and what a good over that he has bowled.
It's not easy from a left-arm medium pace bowler bowling from round the wicket. Is firing on your pads, and there comes the bat. Just a flick, wonderful wrist work, strong wrist, strong forearms. Looks so elegant and looks so powerful. Sandeep Makwana right from the word go. Another one. He once again went for that big extravagant flick shot in the backward square leg region, just getting a single. Similar sort of replay, but this time just getting one in return instead of a 6. So just 2 more away, just 2 runs away, and they are going to head into the quarter league stages that is going to be played tomorrow on 25th of December. That is the Christmas Eve here in Goa. There's going to be a scene whether he's going for the big one, the 4 or the 6, or takes the singles. Clipped away on the leg side, so it's just a single. So we might just see the end from the striking batsman Sandeep Makwana. What an innings this has been. He's come as an opener. He's seen 2 of his partners going back to their dressing room. 1 for 7, 1 for a golden duck. And now with his innings, he has already scored 3 blistering 6s and 2 beautiful boundaries. And they are now just 1 shy. The scores are tied. The scores are level. The fielders are inside. They know the end is near. Oh, beautiful flick shot. Once again, a similar shot. Not a bad ball, but that is going to be the end of it. And they've got that single that was required. And a very well played, very well crafted innings from Sandeep Makwana. Right from the first ball till the end, he was there as a part of this team's victory. This will give a lot of confidence to Sydney Strikers and especially to Sandeep Makwana, because when you see a batter going through the entire inning to see the side home, that is a big plus for Sydney Strikers going ahead into the quarter league stages. Convincing and a comfortable victory here for the team Sydney Strikers. First, they did a fabulous job in the bowling department by just restricting this batting lineup to just 51 for the loss of 2, and in the 50 for the loss of 8, and in the end chased it comfortably with 8 wickets in hand. That's how the scoreboard looked like, and that is a comfortable chase. Sandeep Makwana with a beautiful 35 of 21 balls. Amol Nirugde 7. Santosh Patil played hands with Sandeep in that partnership with just 4 runs. Jishan, he was really fiery and bowled a decent spell. Both the wickets fell to him, Jishan, and that's how Shantidurg Mahamaya has been knocked out of this competition, and it's going to be the Sydney Strikers who are going to head through to the quarter league stages. And now it is going to be the time of the draw of the tomorrow's quarter league stages. मैं यहाँ पे दरखास्त करना चाहता हूँ जो भी कप्तान है यहाँ पे सिडनी स्ट्राइकर्स के, चारों टीमों के कप्तान थोड़ा ड्रॉ के लिए आ जाइएगा. अगर चारों टीमों के कप्तान नहीं तो यहाँ पे जो टीम है सिडनी स्ट्राइकर्स उनके कप्तान थोड़ा आ जाएगा. ये ड्रॉ जो है जो यहाँ पे ऑनलाइन यानी कि लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. जो भी टीमें कल खेलेंगी यानी कि पहला मैच कौन खेलेगा, दूसरा मैच कौन खेलेगा, ये यहाँ पे ड्रॉ अभी हम निकालेंगे. तो मैं दरखास्त करना चाहूँगा, मैं गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ पे अमेजिंग असलना अगर उनके कप्तान है कोई भी है यहाँ पे तो यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में आ जाइएगा, क्योंकि अभी लाइव ड्रॉ होने वाला है कल के मुकाबलों का. कल का मुकाबला जो होगा यानी कि पहला मुकाबला किसके बीच होगा, दूसरा मुकाबला किन टीमों के बीच होगा, उसका लाइव ड्रॉ यहाँ पे अब निकाला जाएगा. हमारे यहाँ साथी प्रसाद परब यहाँ पे मौजूद है. प्लेयर ऑफ द मॅच जातो संतोष पाटील. परत एकदा जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मन्स, 3 विकेट पटकावले आणि फक्त 12 रन देऊन आणि जबरदस्त परफॉर्मन्स त्याच्यासाठी संतोष पाटीलला जातोय प्लेयर ऑफ द मॅच. मी रिक्वेस्ट करतो संतोष पाटीलला थोडं प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये. प्रसाद परब तुला थांबलाय तो तिकडे जायचं आणि तुझा प्लेयर ऑफ द मॅच आमचे जे पाहुणे येणार त्यांच्याकडून हे त्यांच्या हस्ते हे
जो प्राइज आहे तो स्वीकारायचा संतोष पाटिल बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे। तो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया था संतोष पाटिल ने, जहाँ पे 3 विकेट चटके थे सिर्फ 12 रन देकर, और अच्छा प्रदर्शन इस बड़े टूर्नामेंट यानी कि सांगेम प्रीमियर लीग 2024-2025 का पर्व है। और यहाँ पे बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जो उसको मिला है वो काफ़ी मनोबल उनका बढ़ जाएगा कल के मुकाबले के लिए। तो देखेंगे यहाँ पे मैं माइक यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ मेरे दोस्त प्रशांत और प्रसाद परब को। तो देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद हरीश काकोडकर। या सामन्याचा आपण सामन्याचा पुरस्कार जसं जाहीर केला आपण देत आहोत, आणि मी उदय नाईक यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा पुरस्कार द्यावा। मॅन ऑफ द मॅच गोज टू संतोष पाटील, वन्स अगेन ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स, एक अष्टविलू खेळाडू, आणि अष्टविलू खेळाडूच्या जोरावर आपण बघतोय की पुन्हा एकदा सामन्याचा पुरस्कार तो पटकावतोय। बॅक टू बॅक 2 मॅन ऑफ द मॅच। सामनावीर ठरलाय तो संतोष पाटील, मॅन फ्रॉम बेळगाव। अप्रतिम खेळ केलाय या खेळाडूने, विथ द बॉल, विथ द बॅट, एक्सलंट फिल्डिंग, कॅचेस खूप सुंदर, आणि त्याच जोरावर आपण बघतो की संघ पोहोचला सिडनी स्ट्रायकर तो क्वार्टर लीगमध्ये। ड्रॉ मी करणार आहोत, पण संतोष पुन्हा एकदा विचारेन की हा जो प्रवास होता यावर्षीचा किंवा या लीगमध्ये खेळत असताना कसा एन्जॉय केलंस? सर एन्जॉय तर खूपच केलो, मेन म्हणताना आमचे सर्व प्लेयर आमच्यासोबतच होते, सपोर्ट केले, त्यामुळे आम्ही एन्जॉय करत आम्ही आपला गेम दाखवलो। या मुवमेंट आपण बघितलं की परत इथं त्या संघासमोर तुम्हाला लीगमध्ये खेळायचं होतं, आणि हा नॉकआउट मॅच होता, नॉकआउट स्टेज होती, आणि जसं तुम्ही पहिल्या मॅचमध्ये त्यांना पराभूत केलं होतं, 46वर त्यांना थांबवलं होतं, इथे 5 धावा जास्त होत्या, पण संदीपने जी बॅटिंग केली, सँडीने जी बॅटिंग केली त्याबद्दल काय म्हणशील? संदीपदा तर चांगलंच खेळला, नो चान्स काहीच नाही आहे, त्याच्याकडून रन्स येतच राहणार। मी जरा थोडंसं मागेच जातो, KSPLकडे जातो। KSPLचं जसं तुम्ही मला उल्लेख केला की तुमच्याकडचे खेळाडू सगळे हार्ड क्रिकेटर, हार्ड बॉल क्रिकेटर आहेत, सॉफ्ट बॉल तुम्ही खेळलात, पण तो अनुभव काय होता? कारण तुझ्याशी माझे जर काय बोलणं झालं नाही, पण तो अनुभव कसा होता? कारण आपण जर बघितलं तर हार्ड बॉल क्रिकेट आणि सॉफ्ट बॉल क्रिकेट खूप फरक असतो, पण तो जो अनुभव महिनाभराचा होता, तुमचा संघ उपांत्य फेरीपर्यंत पोहोचला, आणि त्यानंतर पुन्हा टेनिस खेळायला तू हार्ड बॉलने आलायस, पण तो अनुभव कसा होता? आम्ही तर फर्स्ट टाइमच खेळलेलो सॉफ्ट बॉल, तो तरी पण आमचं कसं होतं, आपला गेम तिथं जाऊन दाखवायचा होता सगळ्या प्लेयरांना, एवढंच। चल, थँक्यू सो मच, आणि ऑल द बेस्ट तुला क्वार्टर लीगसाठी। आणि मी विनंती करतो पुन्हा एकदा उदय नाईक आपण यायचं आहे, आपल्या शुभ हस्ते आपण हे ड्रॉ करतोय। बघा, प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा सांगतो किंवा जे संघ आतापर्यंत 2-2 सामने जिंकून थेट उद्याच्या दिवसामध्ये क्वार्टर लीगमध्ये खेळणार आहे त्यांच्यासाठी माहिती आहे। कालच्या दिवसामध्ये सलग 2 सामने जिंकले तिरुपती सावर्डे संघाने। शेवटच्या टप्प्यामध्ये सामना आपण त्यांना पुढे चाल दिली, ते म्हणजेच आपण बघितलं साई जय बोडगेश्वर या संघाला। आजच्या दिवसामध्ये 2 सामने जिंकले, आपण बघितलं अमेझिंग असोलना संघाने, एक त्यांना बाय मिळाली होती, आणि आता आपण एक सामना बघितला तो सिडनी स्ट्रायकर। असे एकूण 4 संघ, आणि या 4 संघाचा ड्रॉ प्रेक्षकांच्या समोर आपण लाईव्हच्या माध्यमातून TennisCricket.in वर करत आहोत, आणि जसे ड्रॉ होतील तसं तुम्हाला इथे येऊन खेळायला लागेल, कारण कालचे दोन्ही संघसुद्धा इथेच आहेत गोव्यामध्ये, आजचे सुद्धा दोन्ही संघ तिथे स्टेला आहेत, त्यामुळे उद्या दिलेली वेळ आहे त्या वेळेत तुम्हाला सामने खेळावे लागतील। पहिला सामना बरोबर 9 वाजता सुरू होईल। आपण हे ड्रॉ उदय नाईकांच्या शुभ हस्ते करूया, आणि या 4 चिठ्ठ्यांपैकी आपण 2 चिठ्ठ्या त्यांना सांगूया तुम्ही काढायच्या आहेत। पहिली मॅच सकाळी 9 वाजता असेल, ती तिरुपती सावर्डे, तिरुपती सावर्डेच्या विरोधात बघायचा पहिला सामना असेल तो सकाळी 9 वाजता, म्हणजे त्यांच्याच ग्रुपमधला सामना लागलाय। साई जय बोडगेश्वर वर्सेस तिरुपती सावर्डेचा सामना असणार आहे, आणि आज जे संघ क्वालिफाय झाले त्यांच्यामध्ये दुसरा सामना असणार आहे बरोबर सकाळी 10 वाजता। ही गोष्ट लक्षात ठेवा, अमेझिंग असोलना वर्सेस सिडनी स्ट्रायकर हा सामना तुम्हाला दुसरा सामना उद्या दिवसामध्ये बघायला मिळेल, आणि तशाप्रमाणे आपण क्वार्टर लीगमध्ये उद्या सगळे एकूण 5 सामने बघणार आहोत। तर थँक्यू सो मच। उद्या सकाळी बरोबर 9 वाजता आमचा शेड्यूल सुरू होईल। TennisCricket.inच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक बघतायत त्यांचं पुन्हा आभारी व्यक्त करतो, आणि तुर्त आजच्या दिवसासाठी थांबतो। जय हिंद, जय गोमांतक।